So credit or loan is an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods and services in return for the promise of future payments. ठीक है, एक बेसिकली कुछ भी नहीं होता, ये जो लोन होता है, एग्रीमेंट होता है, ये जो लोन या एग्रीमेंट होता है, ये एक कह सकते हैं ये एक समझौता होता है, एक एग्रीमेंट होता है. ठीक है, इट इज़ एन एग्रीमेंट इन विच जो लेंडर है वो बोरोअर को एक्स्ट्रा मनी देता है बेसिकली मनी देता है, गुड्स या सर्विसेज देता है. उसके रिटर्न में वो उससे क्या मांगता है कि वो प्रॉमिस करे कि फ्यूचर पेमेंट्स उसे देगा, ट्रांजैक्शंस में उसको उसका लोन पूरा कर देगा. ठीक है. नाउ बैंक्स कीप अ स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्फ. बैंक्स जो है बहुत ही स्मॉल पोर्शन रखते हैं कैश का अपने पास. ठीक है. बैंक्स कीप अ स्मॉल पोर्शन ऑफ कैश विद देमसेल्व्स. कैसे? बैंक्स मेड यूज़ ऑफ द डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल. जो बैंक्स हैं वो यूज़ करते हैं डिपॉजिट्स को. बैंक मेक यूज़ ऑफ द डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल. ठीक है. बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स, द डिपॉजिटर्स, and those who are in need of these funds, the borrowers. ठीक है. बैंक्स किस चीज़ का काम करते हैं? बैंक्स इस चीज़ का काम करते हैं, वो मीडिएट करते हैं बोरोअर्स और डिपॉजिटर्स के बीच में. बैंक्स चार्ज अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स दैन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स. जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बैंक्स डिपॉजिट पे ऑफर करते हैं उसका डबल या ट्रिपल कह सकते हैं, उसका हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज करते हैं लोन्स पे. एंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ चार्ज्ड फ्रॉम द बैंक एंड व्हाट इज़ डिपॉजिटेड विद व्हाट इज़ चार्ज्ड फ्रॉम द बोरोअर्स एंड व्हाट इज़ पेड टू द डिपॉजिटर्स. ठीक है. व्हाट दे ऑफर, the difference between what is charged from the borrowers and what is paid to the depositors is their main source of income. वो उनका main source of income होता है. ठीक है. So what is their main source of income? Their main source of income is what they charge from the borrowers and what they charge from the borrowers जो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है. ठीक है. What is charged from the borrowers and what is asked, this is their main source of income. ठीक है. यानी कि क्या हमने डिपॉजिटर्स से चार्ज किया जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि बहुत ही हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बैंक चार्ज करते हैं, और क्या हमने डिपॉजिटर्स को पे किया, फिर जो बच गया उसे हम कहते हैं कि उनका सोर्स ऑफ इनकम, मेन सोर्स ऑफ इनकम. सपोज जैसे कि 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 1 लाख जो है बोरोअर्स से चार्ज किया है किसने? बैंक ने. ठीक है. कोई भी बैंक है, दिस इज़ बी. एंड डिपॉजिटर्स ने पे किया है उनको, मतलब डिपॉजिटर्स को बैंक्स ने पे किया है 7% इंटरेस्ट के साथ उनका डिपॉजिट. ठीक है. मतलब यहाँ पे मेरा ये है, सपोज़ कर लो कि बैंक ने, दिस इज़ अ बैंक एंड फ्रॉम डिपॉजिटर्स, हेयर डिपॉजिटर्स एंड हेयर बोरोअर्स एंड हेयर डिपॉजिटर्स. सो फ्रॉम बैंक्स ने, बोरोअर्स ने बैंक को 1000 रुपीज़ दिए हैं एंड डिपॉजिटर्स ने, बैंक ने डिपॉजिटर्स को 500 रुपीज़ दिए. सो बैंक का जो कह सकते हैं प्रॉफिट कितना हुआ? 1000 माइनस 500 विच इज़ 500 रुपीज़.
ठीक है. सो बैंक्स का प्रॉफिट 500 रुपीज़ का हुआ. सो दिस डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ चार्ज्ड फ्रॉम द बोरोवर्स एंड व्हाट इज़ प्रोवाइडेड टू द डिपॉजिटर्स इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक्स. ठीक है. सो वी कैन से दिस. नेक्स्ट थिंग इज so loan with banks. ठीक है. Now banks keep only 15% of the deposits with themselves as cash. ठीक है. The deposits as cash and kept as provision to the depositors who want this. And banks use major portions to extend loans. So मैं 3-4 चीज़ें repeat करना चाहूँगी and which are हाँ जी. सो विच आर 3 थिंग्स. पहला तो जो बैंक्स हैं 15% जो डिपॉजिट्स हैं हमारे कैश के फॉर्म में रखते हैं अपने पास. तीसरा जो बाकी मोस्ट ऑफ द पोर्शन है बैंक का, मोस्ट पोर्शन दे यूज़ टू एक्सटेंड लोन्स. दे यूज़ टू एक्सटेंड लोन्स. ठीक है. अब हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट की. देयर आर 4 टर्म्स ऑफ क्रेडिट. देयर आर 4 terms of credit. ठीक है. फर्स्ट इज collateral, documentation required, mode of repayment. ठीक है. and the fourth one is interest rate. These are the 4 you can say 4 terms of credit. ठीक है. 4 terms of credit are mode of repayment, documentation required, wait for a second, terms of credit मैंने बता दिया. See, interest rate, collateral required and documentation requirement and mode of repayment together comprise what is called the terms of credit. ठीक है. interest rate, borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal. इनकी borrower को जो है principal amount के साथ साथ पे करना चाहिए interest rate. मतलब करते ही हैं बैंक को. ठीक है. what is interest rate? interest rate is the amount that borrower pays along with the principal amount to the banks. Collateral is an asset. Collateral is an asset that the borrower owns, like livestock, building, vehicle, deposits with banks, and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid. ठीक है. Documentation required is paperwork, that is salary slip, Aadhaar card, PAN card. Mode of repayment is you will repay in the form of installment, lump sum cash, gold, property, or in which things. ठीक है. The terms of credit may vary depending on the nature of the lender and the borrower. ठीक है. एक बार फिर से समझाती हूँ. Terms of credit are of 4. There are 4 terms of credit. First is the interest rate. Interest rate is the amount that the borrower pays along with the principal amount to the banks. Second is the collateral. Collateral is an asset that the borrower owns, like livestock, property, building, deposits with banks, and use it as a guarantee against the until the loan is repaid. ठीक है. Second is documentation required. Documentation is all the paperwork which includes salary slip, PAN card, Aadhaar card, all these things. And fourth one is mode of repayment. That is, you would repay the amount in the form of installments, in the form of lump sum cash, gold, or property. All these are the terms of credit. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज कोलेट्रल हो गया. नेक्स्ट इज क्रेडिट. क्रेडिट से पहले 3-4 चीज़ें हैं. या क्रेडिट, द लेंडर सप्लाइज द बोरोअर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स इज नोन एज क्रेडिट. 2 सिचुएशंस आर क्रिएटेड इन द टर्म्स ऑफ क्रेडिट. ठीक है. टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोल रही हूँ.
के टर्म्स में, दूसरा वाला टर्म्स में। 2 डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट होंगी। एक तो हम स्टोरी पढ़ेंगे सलीम की, एक हम पढ़ेंगे स्वप्ना की, ठीक है। सलीम की स्टोरी में ही प्रॉस्पर्स विद द हेल्प ऑफ द क्रेडिट एंड स्वप्ना इज कॉट इन द डेट ट्रैप, ठीक है। दीज 2 स्टोरीज वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। So let's study the story of Salim who gets the order of 3000 pairs of shoes, ठीक है। He gets the order of 3000 pairs of shoes and he has to complete the order within, you can say, 3 months. He has to repay them in within 3 months, and so within a month, so what he does, he takes the loan for the leather and other raw material and also hires some workers under him for the and also takes advance from the to which he has to place the order, ठीक है। उससे भी, जिससे उससे ऑर्डर मिला होता है, उससे भी वो जो है क्या लेता है, एडवांस में ले लेता है पेमेंट, 1000 रुपीज़ सपोज, और फिर ही completes the order and pays within the time limit provided to him and able to make the profit, ठीक है। helps him to meet the ongoing expenses of production, complete production on time and thereby increase his earnings, ठीक है। credit therefore plays a vital and positive role in this situation. See what happens in this case. We talked about credit, right? इस केस में क्रेडिट ने, सलीम का केस हम पढ़ रहे हैं, इस केस में क्रेडिट ने क्या क्या हेल्प की फॉर रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी पूरी की, ठीक है। इट हेल्प्ड हिम इन प्रोडक्शन, इट ऑल्सो हेल्प्ड हिम इन कंप्लीटिंग द ऑर्डर ऑन टाइम, as well as it also helped him in to meet the ongoing expenses. It also helped him to meet the ongoing expenses of production, ठीक है। तो इन सब चीज़ों ने सलीम की हेल्प की। इनफैक्ट ही प्रॉस्पर्ड, उसने ऑर्डर भी कंप्लीट कर लिया और वो अपनी अर्निंग्स भी कमा पाया इस क्रेडिट की मदद से। बट वहीं अगर हम ऑपोजिट केस पढ़ेंगे स्वप्ना का, सो इन स्वप्नाज स्टोरी द क्रेडिट पुश्ड हर इन डेट ट्रैप। द फेलियर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल। एक बार क्रॉप फेलियर हो गया लोन लेने के बाद भी, जिसकी वजह से वो रीपेमेंट इम्पॉसिबल नहीं हुई। शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ हर लैंड टू रीपे द लोन को रीपे करने के लिए। वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट देयरफॉर डिपेंड्स ऑन द रिस्क्स इन द सिचुएशंस एंड वेदर देयर इज सम सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस, ठीक है। ओके, नाउ क्या होता है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी, मतलब लोन हम लेते हैं अपने ओन रिस्क पे। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वी विल प्रॉस्पर एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट नेसेसरी कि मतलब हम प्रॉस्पर हो जाएं और हम हम डेट ट्रैप में कॉट हो सकते हैं। इट इज़ बेसिकली अ रिस्क कि हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है डिसीजन लेने के, कि हाउ डू वी टेक आवर डिसीजंस। इस केस में क्रेडिट में हमने ये चीज़ सीखी दैट क्रेडिट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। ओके, इट इंक्रीज्ड हिज अर्निंग्स, it increased his profit, helped in production. It also helped in meeting ongoing expenses, ठीक है। help in production complete on time, ठीक है। he got order of 3000 pairs of shoes, ठीक है। he had workers plus raw materials and also took loan of the leather plus cash from large trader in advance payment for 1000 pairs of shoes, ठीक है। and he repaid the debt. And next role was of Swapna. In her case, first of all, she faced the crop failure, then took a loan, then again crop failure, unable to pay the loan, then took credit for cultivation. This year it was a normal crop and the last year loans was also not paid. That's why she had to sell a part of her land. So her profit तो हुआ ही नहीं, उसको खैर रिड्यूस क्या होगा, ठीक है।
एंड एज वेल एज एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया उसके पास, तो डेट ट्रैप में कॉट हो गई. नाउ क्रेडिट्स आर ऑफ टू टाइप, formal credit and informal credit. Informal credit, formal credit and informal credit. See, these are the variety of credit arrangements in the village and okay, formal sector of credit. Okay. These are taken from the loans taken from the banks and cooperatives. First point of differences. In informal, banks are taken from the money lenders, relatives or friends. Informal credit rate of interest is low. In informal credit, there is very high rate of interest. In formal credit, documentation is required. Okay. Let's make a difference between these. Formal credit, okay, rate of interest, rate of interest. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ वेरी लो. ठीक है, इसमें आ जाएंगे बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स. थर्ड वन विल कम collateral is required in formal source of credit. Documentation is also required in formal source of credit, as well as it is supervised by RBI. Rules and regulations are followed. ठीक है, साथ ही साथ इट इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स फॉर द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. फर्स्ट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो. बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स एग्जांपल्स में आ गए. Collateral is required, documentation is required, supervised by RBI. Sixth one is rules and regulations are followed, owned by government agencies or you can say private organizations. Then comes our informal source of credit. Informal source of credit, rate of interest is high, collateral is not required, डॉक्यूमेंटेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड. एग्जाम्पल्स में मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स वगैरह. ठीक है, इसके बाद नो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड. ठीक है, इट इज़ नॉट सुपरवाइज्ड बाय RBI, as well as it is not owned by any government or private organization. ठीक है, ये था. सो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के क्या क्या पॉइंट्स हो गए. इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के पॉइंट्स हो गए. फर्स्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, collateral is not required, documentation is not required, no rules and regulations are followed. एग्जाम्पल में आ गए मनी एंड फ्रेंड्स, रिलेटिव्स वगैरह. ठीक है, it is not supervised by RBI, it is not owned by government or any private agencies, organizations. ठीक है, these are all the points in which formal and informal sector के of credit के. ठीक है, as you can say. ठीक है, अब इससे पहले नाउ व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन्स. एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ मैं. व्हाट डज इट एक्चुअली मीन्स. Here is the statement कि less rate of interest is less, that is high income. ठीक है, connected. Less rate of interest, high rate income, and which leads to country's development. ठीक है, less rate of interest, high income leads to country's development. It means that
लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, सो there would be more money left with us to reinvest in any startups or businesses. ठीक है, more production, we can take education loan, we can invest in human capital formation. ठीक है, as well as investment loan, huge loan for employment of more people, unemployment finished if workshops be opened, more money for production and investment, education loan, human capital development, huge loan for employment of more people, more income left to reinvest and rid of poor from exploitation of by money informal money lenders, more lending, more incomes, and keep business, more startups. ठीक है, अब now let me explain this thing. जी, first thing is more less rate of interest, more money left, so we can reinvest. In what ways? We can start businesses, we can invest it in education loans, we can take also medical loans, we can also take human capital formation, as well development, sorry, as well as we can also open workshops for to get rid of employment. ठीक है, in this ways, all these ways we can invest. ठीक है, reinvest in the form of these ways. अगर इस तरीके से करेंगे हम, तो फिर एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि द रिड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर, ठीक है, ऑफ पुअर बाय मनी लेंडर्स या इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के द्वारा जो पुअर का जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो नहीं होगा. ठीक है, उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, वो नहीं होगा. ठीक है, सो इन दिस वे लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट, मोर इनकम, लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट, मोर इनकम, कंट्रीज डेवलपमेंट. लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट, मोर मनी, reinvest in the form of business, education loans, medical loans, human capital development. ठीक है, workshops can be opened, thus the rid of exploitation of poor by money lenders. ठीक है, इसके बाद है सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHGs. सेल्फ हेल्प ग्रुप इज़ बेसिकली एन इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय द विलेज वुमेन. ठीक है, ये विलेज वुमेन के द्वारा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है जिसमें 15 से 20 मेंबर्स होते हैं. ठीक है, विच सेव 25 रुपीज़ टू 100 रुपीज़. ठीक है, और इसमें उन्हें जब लोन लेते हैं तो कोलेट्रल की भी ज़रूरत नहीं होती बैंक से. दे आर एलिजिबल टू अवेल लोन आफ्टर ईयर और 2. ठीक है, ये कलेक्ट देयर सेविंग्स. ठीक है, ये सब होता है. मैं फिर से बताती हूँ. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर दी ग्रुप्स ऑफ रूरल पीपल, स्पेशली वुमेन. ठीक है, स्पेशली वुमेन. अब इसमें दे पूल, ठीक है, पूल और कलेक्ट देयर सेविंग्स अप टू 25 to 100 रुपीज़. ठीक है, द ग्रुप कंसिस्ट्स ऑफ 15 to 20 मेंबर्स. ठीक है, टिपिकल SHG से कहेंगे. एंड दे आर एलिजिबल टू अवेल लोन फ्रॉम द बैंक आफ्टर 1 or 2 years. ठीक है, एंड द लोन, जो लोन है किसके नेम में सैंक्शन होगा? द लोन इज सैंक्शनड इन द नेम ऑफ द ग्रुप. द लोन इज सैंक्शनड इन द नेम ऑफ द ग्रुप. द लोन इज सैंक्शनड इन द नेम ऑफ द ग्रुप. ठीक है, loan is sanctioned in the name of the group if regular in savings. So these are the SHGs in which it is typical SHG is consists of 15 to 20 members.
they pool or collect their savings. The savings are up to 25 rupees to 100 rupees. ठीक है, and it is started by the at the initiative of rural people, especially